चलिए जी शुरू करते हैं जनाब अपने अपने लेक्चर को। अगेन इफ यू कैन हियर माय वॉइस देन काइंडली रेज योर हैंड्स वंस अगेन, ताकि मैं थोड़ा सा फीडबैक मिल जाए। चलो थैंक यू। चलिए जी, यू कैन सी माय स्क्रीन एज वेल। सो हम जरा स्टार्ट करते हैं जनाब। जो लास्ट वीक हमने छोड़ा था जहां से, उसी जगह से हम इसको वापस से टेक आउट करते हैं। बट जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरीज, वी वर डिस्कसिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक सर्च, और आइडिया हमारा ये था जनाब के डिटर्मिनिस्टिक सर्च के अंदर हमें पता था कि whenever we if we are an agent, whenever we choose an action, and so we'll always end up at a state, at any given state. But now problem ये जनाब के, because the search is not deterministic or stochastic, so if we take an action A1, then there is a chance कि जनाब कि we will end up at any given different state, let's say B, and there's also a chance कि I will end up at any state, let's say C. ठीक है, so there's an maybe an 80% chance कि I will end up at B and a 20% chance कि I end up at C. ठीक है, so इस तरह की searches को में हमें मालूम करने के लिए कि what is the best option that we have, what is the best move that we could do at any given time. हमें करना क्या पड़ेगा जनाब कि we need to do some non-deterministic search in this environment. ठीक है, again basically हमारा गोल क्या था, we want to maximize the rewards that we are gaining, and basically we want to find out कि कौन से steps जो हैं वो हमें ले जाके बेहतरीन rewards जो हैं वो दिला देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से रहा था जनाब के डिटरमिनिस्टिक वर्ल्ड में एवरी एक्शन, एवरी स्टेट एंड स्टेट एक्शन पेयर जो है, it was always corresponding to a single state. But अब ऐसा नहीं हो रहा। Now this could happen जनाब के for every state action pair we could have basically more than one state with the probability. Similarly जनाब S2 prime with 10% chance and maybe S3 prime with 10% chance. ये हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक एमडीपी जो है हम किस तरह से इसको सॉल्व करने के लिए वी गोइंग टू यूज द मार्कअप डिसीजन प्रोसेसेस। और हमने देखा जनाब के मार्कअप डिसीजन प्रोसेस के अंदर हमारे पास वी हैव अ सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वी हैव अ सेट ऑफ एक्शंस जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि स्टेट्स में क्या है, स्टेट जैसे कि आपने देखा कि ये 3,1 is one state, 3,2 is another state, and so on and so forth. एक्शन आपके पास क्या थे, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि वी कैन गो नॉर्थ, वी कैन गो साउथ, वी कैन गो ईस्ट, वी कैन गो वेस्ट, और अल्टरनेटिवली यू कैन से जनाब के वी कैन गो अप और डाउन और लेफ्ट, sorry, right or left. The west is left and east is right. And then we had a transition function. Basically, that tells us what is the probability if you are at S, you take an action A, and then you will end up at S prime. So this is always a probability of telling you जनाब what is the probability you will end up at S prime, given कि अगर आप S पे मौजूद थे और आपने action A जो है उसको choose किया था। ठीक है, it's also called the model और the dynamics, ये दोनों चीजें कहलाई जाती हैं। ठीक है, इसके कंट्रास्ट में जनाब वी हैड व्हाट वी कॉल द रिवॉर्ड फंक्शन, जो बताता बेसिकली अगर आप किसी स्टेट एस में मौजूद है, कोई एक्शन ए परफॉर्म करेंगे, किसी स्टेट एस प्राइम में आ जाएंगे, then you will receive a reward, let's call it s prime, which was any real number. Okay, so this reward could be positive, negative, zero, whatever you want to have depending on the game that you are playing. Then you will have a starting state. हमेशा एक स्टार्टिंग स्टेट हो, जैसे कि हमारी स्टार्टिंग स्टेट इज 1,1 in this example, and basically we could have zero to many terminal states जो कि आपके पास एग्जिस्ट कर सकती हैं। हमारे पास टर्मिनल स्टेट कौन कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल इस जो आप बोर्ड देख रहे हैं इसके अंदर 3,4 इज अ टर्मिनल स्टेट एंड 2,4 इज अ टर्मिनल स्टेट, ये दोनों टर्मिनल स्टेट्स हैं। ठीक है, और बेसिकली हमें करना है कि जनाब कि वी नीड टू यूज दिस फॉर्मुलेशन टू फिगर आउट कि जनाब व्हाट इज द बेस्ट वे of what is best action that we could take that would maximize the utility. Okay. And we also saw जनाब के what is the significance of the word Markov, और हमने देखा जनाब के इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि if this is we want to figure out about our future, to figure out about our future we could have information from our present,
or our past. So basically the probability we can figure out our future is only dependent upon the if अगर हमारे पास दोनों चीजें given है present B और past B, then अगर हमारी environment Markov है, then we can say कि हम the probability of finding out the future only depends upon the present and not the past. So all the information that we require to calculate the future is given in the present. We do not need any information from the past. It is the same thing that we do in our successor function as well. जब हम successor function में current state pass करते थे और उसके against हमें एक set of state जो है वो मिल जाया करती थी. ये चीजें हमने उस वक्त भी डिस्कस करी थी. हमें तलाश क्या करना है? बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट दिस पॉलिसीज. और पॉलिसीज का काम क्या है? पॉलिसी का काम ये जनाब के इट विल टेल अस कि आप किसी स्टेट में मौजूद हैं तो बेसिकली हमें कौन सा एक्शन जो है वो चूज करना है. तो दिस इज द पॉलिसी. पॉलिसी इज डिनोटेड बाय द figure pi and the symbol pi. And pi steric means we want to have the optimal policy that will maximize the expected output. Okay. Now the word expected is very crucial because as the environment is random, क्योंकि environment random है आपकी stochastic है, so you cannot be sure कि exactly क्या होगा. That's why you are just maximizing the expected value जो कि आप करना चाहते हो. Similarly, sorry, one other thing. So pi steric is giving you the optimal policy, and basically जो हमारी जो policy है basically defines the reflex agent that tells us what to do at any given state. So it will have it is a map that will tell you जनाब कि किसी स्टेट पे कौन सा एक्शन जो है आपने परफॉर्म करना है. ठीक है. तो अगेन I will try to discuss the programming aspects of it as well today. So आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा जनाब कि किस तरीके से हम इसको प्रोग्राम करते हैं, किस तरीके से हम चीजों को बना सकते हैं. ठीक है. चलें जी. So moving on, and we can see कि जनाब हमारे जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जैसे कि लिविंग रिवॉर्ड हो गया, वो इम्पैक्ट डालेंगे कि हमारी पॉलिसी क्या बनेगी. ना पॉलिसी इज बेसिकली टेलिंग अस के लेट्स से कि अगर ये 1,1 है, दिस इज 1,1 एंड बेसिकली दिस इज 1,2 एंड 1,3 एंड 1,4. द पॉलिसी इज टेलिंग यू कि जनाब द पॉली फंक्शन को अगर आप इनपुट देंगे कि 1,1 तो इट विल गिव यू एन आउटपुट कि जनाब मूव अपवर्ड्स. ठीक है. So basically for any given input, any given state, it will tell you कि आपको कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है and so on. ठीक है. So again, as the parameters will change, as the parameters change, so will the resulting output will. पॉलिसी भी हमारी बदल जाएगी. तो अगेन जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप आज की सिचुएशन देख लें कि मे बी के आज से एक महीने पहले बाहर निकलना कोई मसला नहीं था, बट बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन जो पैरामीटर्स हैं वो बदल गए, एंड दैट्स व्हाई द डिसीजन कि वी गो आउटसाइड और नॉट हैज आल्सो चेंज्ड. ठीक है. सिमिलरली यू कैन सी आपके द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज, different kind of values on the policy. ठीक है. ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की. देन एक और कंसर्न हमें आया था जनाब के रिवॉर्ड्स को हम कैसे मेजर अप करें. तो अगेन इफ वी आर गेटिंग अ रिवॉर्ड लाइक दिस 1 1 1 1, is it better or so again if this u1 is better, or if we are getting a reward where one is no reward, other is no reward, third step पे कोई reward नहीं, but चौथे step पे we are getting a reward of 4, then which is better, u1 or u2? And basically we figured out by using again, तो हमें ये बात तो बिल्कुल कंफर्म थी कि जनाब अगर कहीं रिवॉर्ड ज्यादा है तो इट्स बेटर देन द रिवॉर्ड दैट इज लेस, बट अगर अभी मिले बाद में मिले तो भी हमने फैसला किया जनाब कि हमने बाय यूजिंग सम डिस्काउंट फैक्टर्स के जो रिवॉर्ड अभी मिल रहा है वो ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू वो रिवॉर्ड जो कि बाद में मिलेगा. उसके लिए जनाब हमने यूज किया वो था डिस्काउंटिंग रेट या डिस्काउंटिंग फैक्टर, और हमने कहा जनाब की जो रिवॉर्ड अभी मिल रहा है उसकी पूरी वैल्यू है, जो रिवॉर्ड एक स्टेप के बाद मिलेगा तो बेसिकली जो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरोथ पावर ऑफ द डिस्काउंट फैक्टर से, एक स्टेप बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट पावर ऑफ द डिस्काउंट रेट से, और जब सेकंड रिवॉर्ड मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे जनाब सेकंड पावर ऑफ द
डिस्काउंट फैक्टर, तो थर्ड स्टेप पे जो मिलता इट वुड हैव बीन मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड पावर ऑफ द डिस्काउंट रेट, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो इवेंचुअली हमने ये भी देखा कि पहले स्टेप पे अगेन तो पहले स्टेप पे जो रिवॉर्ड मिला इट्स फुल रिवॉर्ड, अगले स्टेप पे जो रिवॉर्ड मिलेगा इट विल बी डिस्काउंटेड बाय अ फैक्टर ऑफ गामा, उस अगले स्टेप पे जो रिवॉर्ड मिलेगा इट विल बी डिस्काउंटेड बाय द फैक्टर ऑफ गामा स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। डिस्काउंटिंग के फायदे क्या है जनाब, दो चीजें हैं। फर्स्ट थिंग इज जनाब के इट विल हेल्प अस इन कन्वर्जिंग एल्गोरिथम्स, अगेन एल्गोरिथम में कन्वर्जिंग का क्या मसला होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जनाब के व्हाई डू वी नीड एल्गोरिथम्स टू कन्वर्ज, ठीक है। सो लेट्स सपोज जनाब के अगेन वी सॉ मेनी एग्जांपल्स कि अगर डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिफरेंट एग्जांपल्स, अगेन वी नो दिस। So we did this quiz as well, and I hope Janab you have now a better understanding of how discounting works and why do we need discounting in our MDPs to convert, to make sure कि हमारे algorithm जो है वो convert हो जाए। चलें जी, so today we're going to talk about again अच्छा sorry before we start today's things, one other thing, what if कि जनाब हमारे पास इनफाइनाइट यूटिलिटीज हैं, यानी कि अगेन इफ देयर इज नो टर्मिनल स्टेट देन व्हाट विल हैपन, कि मैं जिंदगी भर मेरा एल्गोरिथम चलता ही रहेगा, बिकॉज अगर इनफाइनाइट स्टेप्स हैं देन क्या रिवॉर्ड भी इनफाइनाइट होगा, एंड वी फिगर इट आउट कि जनाब कि अगर मेरा जो डिस्काउंट रेट है, इफ माय डिस्काउंट रेट इज बिटवीन 0 and 1 देन आई कैन गारंटी बेसिकली कि जनाब कि मेरा जो अगर इनफाइनाइट स्टेप्स भी हैं then I can guarantee कि मेरा जो फंक्शन है, जो मेरा रिवॉर्ड है, अपर बाउंडेड बाय दिस वैल्यू। सो अगेन लास्ट क्लास के अंदर हमने इसको ड्राइव भी करके देखा था जनाब के बाय दिस वैल्यू इज ट्रू, ठीक है। तो अगेन इफ यू हैवंट सीन दिस थिंग सो आई वुड रेफर, यानी कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को एक दफा दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। चलें जी, सो basically तो what happened है कि जनाब के there is a guarantee that for every policy a terminal state will eventually be reached। eventually का मतलब ये है जनाब के eventually you will get to a state जहाँ पे value 0 होगी आपको, क्योंकि you will not have any reward and you will basically stop over there, कि जहाँ पे reward मिलना 0 हो जाएगा, you will not have any reward। this is what the guarantee will give अगर हमारे पास डिस्काउंट रेट जो है वो सफिशिएंटली मैनेजेबल है बिटवीन 0 and 1। So let's take an example of these things and apply it to a pseudo example, and the example pseudo to nahi hai, just an example। So the example that we're going to use is this car racing example। So we have 3 states in this example, so let me choose an appropriate color। So let's choose let's choose I think orange। So basically हमारे पास 3 states हैं, cool, warm और overheated, ठीक है। So basically तो अगर मैं एज एन MDP इसको प्रोग्राम करें, एज एन if we model this thing as an MDP, then you would notice कि जनाब if you model this thing as an MDP तो हमारी states कौन कौन सी हैं। So our states are basically we have 3 states। So let's call this state SC, C for cool, then SW where W is for warm, and basically SO where O is for overheated। Then we have 3 states, so SC, SW and SO, okay। So how many actions do we have? So we have basically 2 actions। So actions are either slow or fast। So we have 2 actions, we can either go slow or we can move fast। what is the term starting state? Starting state basically हमारी है starting state is SC। It's not given but again we can start from SC, okay। terminal state क्या है आपकी जनाब? terminal state is as you can figure out using in this example, terminal state is SO जहाँ पे आप overheat हो जाएंगे, then you have nowhere to go। so as SO is the place where you get overheated and you have no place to go। now let's figure out कि जनाब आपका टर्मिनल, आपका जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो क्या होगा।
So basically मेरे पास 3 states हैं. So let me have a grid for the transition function. तो यहाँ लिखना transition function. Transition function. So basically it's a lookup table. So transition function. So again, do not mind this the spellings. So again, so we have a grid like this. So on the left hand side we have the states. So states, तो मेरे पास स्टेट कौन कौन सी हैं जनाब. आई हैव अ स्टेट SC, S, SW and SO. So again let me push it a bit upwards. मुझे पता है कभी कभार जो oops what I did. So I hope जनाब you noted these things. So again just let me do it once. The states are SC, SW, SO. Actions are actions हैं आपके पास जनाब slow and fast. ठीक है जी. And basically and what else. So terminal starting state जो है आपकी starting state जो है वो आपकी SC है इस एग्जांपल के अंदर. एंड बेसिकली टर्मिनल स्टेट जो है वो आपकी बेसिकली है SO. ठीक है. Now what about the transition function? So let me write the transition function like this. So what I'm going to write, you can write it any way you like, does not matter basically. But so basically होगा ये जनाब के, let's start with SC and drive the transition function of this. So if I'm at SC, so अगर मैं cool state पे मौजूद हूँ, and if I drive slow, जो मेरा एक्शन है स्लो, then what is the chances के I will end up at SC, मैं क्या उसी स्टेट पे रहूंगा. तो you can see if you are cool state, then there is one probability यानी कि certainty है कि जनाब you will end up at slow state, sorry SC state अगर आप ड्राइव करेंगे slow, then the chances are 1. ठीक है. Now what are the chances कि अगर आप SC पे मौजूद थे और आप फास्ट ड्राइव करेंगे तो you will end up at SC. So basically if you look at this arrow is telling you ना कि अगर आप फास्ट ड्राइव करेंगे तो there is a 50% chance कि you will end up at the cool state. So if you drive fast, then there is a 50% chance that you will end up at the cool state. Similarly जनाब अगर आप इस arrow को देखें तो we'll see अगर आप फास्ट ड्राइव करेंगे there is a 50% chance that you will end up at the warm state again. Says जनाब for the cool state, if you drive fast, so there is a 50% chance that you will end up at SW. Okay, there is a 50% chance that you will end up at SW. ठीक है. तो सिमिलरली जनाब अगर आप वार्म का देख लें, so you can see जनाब के S warm, so you have other two options, cool या fast. So if you drive slow, there's a 50% chance that you will end up here, and there's a 50% chance that you will stay in the warm state. तो अगर आप cool रखेंगे अपने slow रखेंगे अपनी स्पीड को, then क्या आप वापस SW पे आ जाएंगे, इसके चांसेस 50% है. और सिमिलरली अगर आप वार्म स्टेट पे हैं और आप स्लो ड्राइव करेंगे तो देयर इज अ 50% चांस कि जनाब आप कूल स्टेट पे आ जाएंगे. हाउएवर अगर आप वार्म स्टेट पे मौजूद थे और आपने फास्ट ड्राइव की, यू कैन सी दिस एरो, तो फास्ट ड्राइव की देयर इज अ सर्टेन चांस कि यू विल एंड अप एट द ओवरहीटेड स्टेट. सर्टेन चांस मतलब सर्टेनिटी है, सॉरी SO. So you will end up at 1 point. This is a guarantee कि जनाब आप जो है वो SO, there is a guarantee कि जनाब you will end up at the overheated state. ठीक है. And similarly if we complete this thing, so if you are at the overheated state,
So this is the terminal state. You can only exit and you will go nowhere basically with the probability of 1.0. Okay. So eventually, janab, you will always end up at the अगर आप overheated state पे you will always exit, and this is the thing that you will have to notice now. Okay. Now let's talk about the reward function. So again, probabilities are of course between 0.5 and 0 and 1. However, reward functions are not bounded by 0 and 1. They could be any real number. Okay. So let me now give you the basically the reward function. So let me remove some ink so that I can easily show you the reward function as well. So let me remove this. So again, I'll show it to you for the cool state. You can figure it out for the warm state and for the overheated state as well. Okay. चला जाना. So so if you are at the reward function says कि अगर आप स्टेट कूल में मौजूद थे और आपने स्लो गाड़ी चलाई और आप कूल स्टेट पे ही रहे तो आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा? द रिवॉर्ड विल बी +1. ठीक है. एंड सिमिलरली जनाब अगर आप कूल स्टेट पे मौजूद थे, आपने फास्ट गाड़ी चलाई और उसके बावजूद भी आप कूल स्टेट पे रहे, देन द रिवॉर्ड विल बी +2. ओके. सिमिलरली जनाब के अगर आप कूल स्टेट पे थे, आपने फास्ट गाड़ी चलाई और आप वार्म स्टेट पे चले गए, तब भी रिवॉर्ड कितना मिलेगा आपको? द रिवॉर्ड विल स्टिल बी +2. ठीक है. So definitely janab, again I have done some the reward function uh, for slow cool. You can extrapolate and do the same process for the other states. Again, maybe one more. So if you are at the warm state and you drive fast, then you will always end up at the overheated state, and the reward you will get is -10. Okay. So a reward that is not positive, it is negative reward. Okay. So again, I hope janab you are getting the idea of how to um, model Markov decision process. Again, if there's any confusion, then you are more than welcome to post any questions on Piazza so that I can take it over there. Challenge. So now if you draw a search tree, so of this scenario, you will find janab ke. So this is the state we want to find out whether should I drive slow or whether should I drive fast. I have two actions available. And if you drive slow, then the guarantee you will end up at the slow state, cool state, sorry. And so if you drive fast, then there's a chance that you will either end up, the 50% chance either end up at SC, and there's a 0.5% chance you will end up at SW, and so on and so forth. If you can see, you can easily visualize that this tree can go till infinity. Okay, so you can move between cool state and warm state, and uh, this can potentially go till infinity, because it's something that you should realize. So take a moment, look at this tree, and basically realize why this could go to infinity. Okay, Chana. So now we're going to talk about janab how to calculate the value of an state. Okay, so we want to figure out a policy, and the policy will tell you कि कौन सी स्टेट पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है. एंड बेसिकली अगर मेरे पास 4 एक्शन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 2 एक्शन अवेलेबल है, स्लो एंड फास्ट, देन व्हाट इज द बेटर एक्शन फॉर मी? सो द आइडिया इज वेरी सिंपल कि आई विल कैलकुलेट कि स्लो जाने से कितना फायदा होगा, लेट्स कॉल दिस थिंग V1, और फास्ट जाने से कितना फायदा होगा, इसको कहते हैं V2. देन द वैल्यू ऑफ दिस स्टेट इज सिंपली द मैक्स between V1 and V2, because we want to maximize utility. ठीक है. तो यहाँ पे जनाब V1 पे ज्यादा वैल्यू मिल रही है तो वी विल गो टू V1, एंड अगर ऑन एवरेज V2 पे ज्यादा वैल्यू मिल रही है तो जनाब वी विल मूव टू V2. Okay, this is the general idea that we are following for this uh, MDP for MDP. Basically idea again simply यही जनाब कि you have this node and you should remember this is the max node.
And max node are called max nodes because they take the max of their successors. सही है, जैसे हमने मैंने मैक्स में देखा था. And similarly जनाब, these nodes which I was referring to, chance nodes, is now going to referred as Q states. और इनकी वैल्यू में पता है जनाब कि we use the weighted average to calculate their values. ठीक है, तो अगेन weighted average को हम यूज करते हैं जनाब इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए. दिस इज व्हाट वी नो. ठीक है जी. सिमिलरली जनाब यू कैन सी, so the idea is जनाब you want to figure out what is the value of this node. ठीक है. And and if you look at this states, this Q state, it is representing कि जनाब किसी स्टेट पे आपने कोई एक्शन A चूज कर लिया. Now this is S comma is representing you were at this state S and you chose an action A. तो किसी स्टेट पे कोई एक्शन आपने चूज कर लिया. नाउ दिस इज यू वांट टू फिगर आउट कि बेसिकली अब इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे लिए. एंड द रिवॉर्ड इज बेसिकली, अगर आप किसी अपने कोई स्टेट एस पे मौजूद थे, आपने कोई एक्शन ए चूज कर लिया, एंड इफ यू एंड अप एट एस प्राइम, एंड दिस इज द रिवॉर्ड दैट यू विल गेट. दिस इज द रिवॉर्ड दैट यू विल गेट by choosing an action S A on a state S and ending up at S prime. Okay. So basically अब हम इसी आइडिया को लेके चलते हैं आगे, और लेट्स यूज दिस आइडिया टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ आवर स्टेट्स जो कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे मौजूद है. Basically we want to figure out the policy as well as the utility of our states. ठीक है. Now how do we solve your MDPs? MDPs को solve करने का तरीका it's very simple. So let's see जनाब कि how can we solve our MDPs. ठीक है. Now if you look at this race tree, so what you are observing is कि जनाब कि I am at a state. I have two options. If I choose A1 or A2, and basically अगर if I choose A1, then the value of this state will be a summary of all these states. Okay. And basically the value of A2 will be a summary of all these states. Okay. So not something that is very simple to do, but however we will find out janab ke what an efficient way of calculating this thing. Okay. Again you can see this could go till infinity, because you are moving from slow to warm, warm to slow, slow to warm, warm to slow, and this has the potential of going till infinity. So basically अगर हम expecting max को use करते हैं यहाँ पे, then this is not feasible. And the reason it's not feasible because we are doing a lots and lots of repetitive work. Now what is repetitive work? Repetitive work basically ये बता रहा है आपको जनाब कि एक ही काम आप बार बार कर रहे हैं. ठीक है. So again if you think for a moment, so you will realize कि जनाब आप algorithms में already पढ़ के आ चुके हैं कि किस तरीके से जनाब अगर हमें एक ही काम, हमारा एल्गोरिथम एक काम बार बार कर रहा है, तो उस समय किस तरीके से रोक सकते हैं, किस तरीके से हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको एफिशिएंटली या मोर ऑप्टिमली जो है उसको वो सॉल्व कर सकते हैं. ये काम आप एल्गोरिथम में देख के आ चुके हैं मोर और लेस. एंड द टॉपिक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज व्हाट वी कॉल डायनेमिक प्रोग्रामिंग. ठीक है. So this is what we're going to do to solve this tree. Because expected max we cannot do, and the reason we cannot do because it is too much complex. So we have to do too much redundant work. एक काम जो हम बार बार कर चुके हैं उसको हमें बार बार जो है काम वो करना पड़ेगा. Now let me just show you a small demo of showing जनाब कि why this is not a very good idea. Why we cannot use expected max search, and why using using normal recursive algorithm to compute this value is not a good idea. Okay. So let me switch back to my IDE and see जनाब के हम वहां से क्या चीजें ले सकते हैं. Again I'm going to share you my clip screen. Just
Now you are seeing my Eclipse ID. So again, what I'm going to do is to show you an example of an example of Fibonacci series. Now we all know Fibonacci series, right? हमें पता है ना Fibonacci series क्या होती हैं. तो basically ये एक series है. So it's a series जिसके अंदर नंबर जो है, कोई भी नंबर जो है वो previous two numbers का sum होता है. Again we know zero का zero, one का one होता है. And then for 2 is 1, and for 3 is 3, and for 4 is 5, and sorry, 5 is, yes, for 0 1 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8, and so on and so forth. Every number is basically the is the sum of the previous two numbers, and we know this formula. Okay, we know the formula, and the formula is janab ke f of n is f of n minus 1 plus f of n minus 2. What you're seeing over here is a classical implementation of Fibonacci series. ठीक है, तो again you see जनाब के अगर n की value less than 2 है, we will return n, otherwise we return Fibonacci of n minus 1 plus a Fibonacci of n minus 2, and this is the general idea that we have. Okay, so again, Fibonacci of 0 is 0, Fibonacci of 1 is 1. This is what is 0 का value 0 है, 1 की value 1 है, 2 की value 1 है, so 2 की value is 1. 3 की value is 2, 4 की value is 3, 5 की value is 5, 6 की value is 8, and so on. So now let's calculate Fibonacci series by using these values. So मैं थोड़ा comment कर लेता हूँ, and I'll talk about this thing later on. इसको डाल दें. So you're going to display Fibonacci of 1 for 5 numbers. Okay, and as you will expect, you know, Fibonacci of 1 or 5 numbers will be calculated pretty quickly. Okay, so it has been calculated pretty quickly, but what you are seeing over here, if you observe quickly a bit closely, you can see यहाँ पे Fibonacci of 3, ये मैं एक दफा कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक दफा कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे दो दफा. हालांकि हमें पता है Fibonacci of 3 is the same number, so you calculate it 20 times, 30 times, 100 times, it will remain the same number. Okay? So similarly जना Fibonacci of 2 आप एक दफा, दो दफा, तीन दफा कैलकुलेट कर. Okay? Similarly अगर मैं नंबर कोई और बड़ा ले लेता हूँ, let's say if I take the number, let's say 10, Fibonacci of 10. So you will realize कि जनाब many numbers are getting repeated. Okay, so again 2 is calculated 10 times, 3 is calculated many times, 4 and 5 and 6 and so on so forth. So the idea of dynamic programming is basically कि बजाय इसके कि जनाब हम एक ही नंबर को बार बार कैलकुलेट करें, we store intermediate information, अपनी intermediate information को स्टोर करें, और जब जरूरत पड़े तो हम उसको रिकॉल कर लें बजाय के रिकम्प्यूट करें. So basically what we are doing, we are creating a temporary storage to Fibonacci numbers, and basically अब होगा ये कि इनिशियली हम उसको थोड़ा सा इनिशियलाइज कर लेंगे. इस तरीके से इनिशियलाइजेशन क्या है, हमें पता है Fibonacci of 0 is 0 and 1 is 1. So every recursive algorithm requires a base case, and the base case for Fibonacci series, Fibonacci of 0 is 0, Fibonacci of 1 is 1. Okay, and basically what we're going to do, for every number we're going to initialize our array by -1. -1 will indicate इसकी वैल्यू, किसी भी नंबर की Fibonacci नंबर अगर -1 है, it will denote कि जनाब की वैल्यू हमने अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं करी, तो we have to calculate this thing. Otherwise अगर -1 नहीं है, then you have to calculate this value. ठीक है, तो again what will happen, so we are using another algorithm called Fibonacci 2. So again just to show you कि जनाब के why this is so troublesome, if I calculate the Fibonacci number of 30, and in the meantime I will just let it run. You can see janaab, it will start running and running and running, and it will take quite a lot of time to run. So you can see the console below कि janaab it is taking a lots and lots of time to get completed. ठीक है. So again in the meantime अगर हम इस दूसरे वाले फंक्शन को देखें तो हमने किया क्या यहाँ पे, बेसिकली हमने पहले वेरीफाई ये किया कि क्या जो नंबर आप कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं क्या वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है या नहीं. अगर चाह के ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो आप सिंपली उसको रिटर्न कर दें, यू विल नॉट रिकैलकुलेट दिस. अच्छा, अगर चाहे वो रिकैलकुलेटेड पहले से कैलकुलेट नहीं था तो यू विल जस्ट कैलकुलेट द फंक्शन. ओके, एंड स्टोर इट इन अ टेम्परेरी स्टोरेज. ओके, तो टेम्परेरी स्टोरेज में स्टोर कर लेंगे, एंड बेसिकली देन नेक्स्ट यू विल रिटर्न दैट नंबर, एंड द नेक्स्ट टाइम दैट नंबर विल बी ऑलरेडी कैलकुलेटेड,
और जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा से कॉल नहीं करेंगे। यू कैन सी जनाब काफी टाइम हो चुका है बट अभी तक आंसर नहीं मिला, तो अगेन आई विल स्टॉप दिस थिंग, नॉट हैव मच टाइम। So I will use the other Fibonacci 2 to calculate this value, and you will be surprised to see the value is calculated almost immediately. Okay, and the surprising thing is जनाब you can see जनाब every number is called once. You're not calculating the values twice. ठीक है, एक दफा ही calculate कर रहे हैं जनाब, and you're not calculating these values twice. So this is the recursive implementation. And अगर मैं 50 भी कर लेता हूँ उसको, 60 भी कर लेता हूँ, and you can see जनाब it will be calculated instantly. It's more or less instant. Okay? तो काफी बड़ा number है, but it's calculated instantly. Okay? Because of the fact that we are not calculating the same thing over and over and over again, and that's why we are saving a lots and lots of time. Okay? So what we can do, we can further improve this function by making it a by making it a uh, bottom up iterative version. So this recursion, I'm going to recursion so we can make it a bottom up recursive version. So Fibonacci 3 kya lete hain isko, and there won't be any recursion over here. Okay? So we won't have any recursion. Okay? So we will declare an array. So long array is equal to long. We will need n plus 1 numbers again, because n is the limit. We need for n plus 1 numbers. And we will say जनाब कि we know कि हमें कुछ चीजें पता है, हमें पता है जनाब कि Fibonacci of 0 is 0 and Fibonacci of 1 is 1, and basically then what we will have a loop and I is equal to 0. Sorry, 2 से start करेंगे because 0 1 हमने calculate कर लिया, तो we start from 2. I is less than n plus 1, so we want n as well, and I plus plus, and basically यहाँ पे हम कहेंगे जनाब कि Fibonacci of array of I is equivalent to fib underscore array I minus 1 plus I minus 2 and minus 2, and I will return basically return कर देंगे यहाँ Fibonacci array. So but if I run this program, it will be even faster because we are not printing anything, and it will be much more smoother than the program that हमने recursive लिखा था. So this is dynamic programming for you. Basically, what we are doing, we are into, storing the independent results. So again, it's a bit more faster because we are not calculating any intermediate results over and over again. Now, this is the same idea that we are going to apply. Um, we are going to apply over in the calculation of our state values. Okay. So let me go
So basically I hope जनाब you can see this, you can see this window, और basically यहाँ पे आप यहाँ पे चीज आप देख सकते हैं वो ये जनाब के you can calculate the values and the Q values of these things. So you can see के for the discount rate of 0.9 and the living reward of 0, so these values are calculated like this. तो जितना ज्यादा रेड है उसका मतलब ये जनाब के उतना ज्यादा ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव के अंदर है, द वैल्यू इज नेगेटिव, एंड और जितना ज्यादा ब्राइट ग्रीन है उतना ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव है. तो इफ यू लुक एट द क्यू वैल्यू, so you will see जनाब की जो वैल्यूज क्यों सिलेक्ट करी गई हैं. So every iteration you can see जनाब के 0.85 के लिए सिलेक्ट करी गई because of all the actions that we have, the best value is 0.85, and similarly 0.74 is the best in all that thing, and so on so forth. ठीक है. सो अगर आई कैन शेयर दिस कोड विद यू ताकि आप उसको एक दफा अगर चला के देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, एंड यू कैन सी कि जनाब हाउ दी थिंग्स आर वर्किंग आउट, स्पैनिंग आउट, किस तरह से काम कर रहे हैं. ठीक है, तो आई विल स्टॉप इट ओवर हियर इंशाल्लाह.